Hello dear students, how are you? Myself Ritesh Jain, and once again I welcome to my YouTube channel Chemistry Globe. And from today we will start the 11th class chemistry. Okay, so are you ready? अभी 30 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद है और इसके लिए आपका नुकसान नहीं हो क्योंकि 10th की एग्ज़ाम भी हो चुकी है, रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। आपका नुकसान नहीं हो इसके लिए हम लोग रेडी हैं वीडियो बनाने के लिए। वीडियो आपके पास में डेली आते रहे। ओके, तो 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसी चैप्टर पर बेस्ड है। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसको अच्छी तरीके से समझना है अपने को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। द सिमल्टेनियसली रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is known as redox reaction. I am writing here definition. The simultaneous reaction of oxidation and reduction is known as redox reaction, or I can say the combination reaction of oxidation reduction is known as redox reaction or called as redox reaction. So the combination reaction of oxidation and reduction. So first of all we will have to understand what is the oxidation reaction and what is the reduction reaction. Okay, so first of all we will understand what is oxidation reaction. Oxidation reaction and reduction reaction. पहले तो क्या होता था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ एक क्लासिकल डेफिनेशन है, तो पुरानी डेफिनेशन हम लोग मान सकते हैं। पहले अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे जो क्लासिकल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ओके, अब क्लासिकल डेफिनेशन क्या क्या है, देखो कई केस है इसमें। देखो पहले मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या क्या डेफिनेशन दी गई थी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब पहले क्या माना जाता था, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन, the addition of oxygen or the addition of electronegative element is known as oxidation reaction. So listen carefully, the addition of oxygen or the addition of electronegative element is known as oxidation reaction. I am writing here examples. Suppose here the carbon, or I am adding here oxygen, and what will be formed? CO2. So here addition of oxygen is take place, so I can say that it is the oxidation reaction. Okay, when sulfur reacts with oxygen, can it form the SO2? Here addition of oxygen also take place, so it is the oxidation reaction. Okay, I am writing another example. Magnesium reacts with oxygen and form NGO. Oxidation reaction, because here oxygen, addition of oxygen take place. Okay, I am writing another examples of oxidation reaction, that is when zinc reacts with oxygen, then it forms JNO. Here also the addition of oxygen take place. Okay, so it is the oxidation reaction. But another, the addition of electronegative element is also known as the oxidation reaction. It is the classical definition of the oxidation reaction. Okay,
addition of electronegative element. So I'm writing here the example. Suppose here it is the FeCl3. Okay, FeCl3. When FeCl3 reacts with SnCl2, okay, or SnCl2, then it forms the SnCl4. It forms the SnCl4 plus FeCl2. Okay. Here chlorine is the electronegative element, and chlorine add here. So here the oxidation reaction takes place. I am writing here the another example. When Fe reacts with sulfur, sulfur is the electronegative element. It forms FeS. So addition of electronegative element takes place. So it is the oxidation reaction. When magnesium reacts with fluorine, then it forms MgF2. Here addition of fluorine takes place, and fluorine is the most electronegative element. So the addition of electronegative element is also known as the oxidation reaction. Okay, so this is the oxidation reaction in the comparison of case number first. Okay, now we will discuss about the reduction reaction. So I am writing here the opposite definition of oxidation reaction. Removal of oxygen or the removal of electronegative element is known as the reduction reaction. I am writing here the definition. Removal of oxygen or removal of electronegative element is known as reduction reaction. Removal of oxygen, suppose it is the HgO. When I will give the heat, then it will be break into Hg plus O2. So here removal of oxygen takes place. So what will be the reaction? The reaction will be the reduction reaction. Okay. Suppose MgO. When I will give the heat, then it will be break into Mg plus O2. So what type of reaction is here? This reaction is reduction reaction. Removal of electronegative element. Okay. Suppose it is SnCl2. It reacts with FeCl3. Then it will be formed SnCl4 and it will be converted into FeCl2. Here chlorine is the electronegative element. The electronegative element is removal, or I can say the removal of the electronegative element is here take place. So this is the reaction of reduction reaction. So removal of oxygen or the removal of electronegative element is known as the reduction reaction. It is the case number first. Now we will discuss about the case number second. That is, what is the case number second? You should take the screenshot timely. Okay. I am discussing about the case number second. In second case, we consider that about the oxidation reaction. I am writing here oxidation reaction and here reduction reaction. Okay. Case number second. The removal of hydrogen
or the removal of electropositive element is known as the oxidation reaction. According to case number second, the removal of hydrogen or the removal of electropositive element is known as oxidation reaction. So let's see some example. Okay, removal of hydrogen. Suppose it is the HCl. When I will give the heat, it will be break into H2 plus Cl. Okay, here hydrogen is removing. So what will be the reaction is here? Oxidation reaction. Okay, the removal of hydrogen or the removal of electropositive element. Electropositive element, removal of hydrogen. I am taking another example. 4Hi, it reacts with O2, then H2O form, and it made the I2. So Hi is removing the hydrogen. So here the oxidation reaction takes place. Okay, potassium iodide. Okay, potassium iodide. This is the potassium iodide. When potassium iodide reacts with Cl2, okay, then iodine will be removed. Okay, and it forms KCl. So here iodine, potassium is the electropositive element. So the removal of potassium is taking place in this reaction. So this reaction will be the oxidation reaction. Okay, so the removal of hydrogen or the removal of electropositive element is also known as the oxidation reaction according to classical definition. Okay, now we will understand what is the reduction reaction. What is the reduction reaction? Okay, we will write here the opposite definition of oxidation reaction. The addition of hydrogen or the addition of electropositive element is known as the reduction reaction. In case second, the addition of hydrogen or the addition of electropositive element is known as reduction reaction. Okay, suppose it is the H2 reacts with Cl2 and it forms the 2HCl. So in this reaction, addition of hydrogen added with Cl2, so addition of hydrogen take place. So this reaction is known as the reduction reaction. Okay, I am writing there another example. H2 reacts with sulfur and it forms the H2S. In this reaction, addition of hydrogen is taking place. So this reaction will be reduction reaction. Now the addition of electropositive element. Electropositive element, suppose it is the copper. All the metals are the electropositive element. Remember always, all the metals are electropositive elements. Copper reacts with CuCl2 and it forms Cu2Cl2. So in this reaction, addition of copper taking place. So addition of electropositive element taking place. So this reaction will be reduction reaction. Okay, Hg, it is also the electropositive element, reacts with HgCl2 and form Hg2Cl2. So addition of electropositive element
take place. So this reaction will be the reduction reaction. This is the classical definition of oxidation and reduction. लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये definition सही है? क्या हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन रिएक्शन है? क्या ऑक्सीजन का एडिशन हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है? तो कुछ एग्जाम्पल देखते हो। अब जैसे मान लो कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि Na फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, सॉरी Na हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन। तो आप ये कहोगे कि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सो दिस रिएक्शन विल बी द रिडक्शन रिएक्शन, बट इट इज द रॉन्ग। इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हियर सोडियम, यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 0 से ये +1 में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, नॉट द रिडक्शन रिएक्शन। अब वो तो क्लासिकल एक डेफिनेशन दे दी गई थी। अब और भी मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। O2 reacts with fluorine, okay, and form OF2, okay, it form the OF2. अब here oxygen is added, so oxygen का addition हो रहा है, so this reaction should be the oxidation reaction according to the classical definition, but this reaction is the reduction reaction। यहाँ पर फ्लोरीन का रिडक्शन होता है, यहाँ पर 0 है, 0 से ये -1 में चला जाता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का रिडक्शन होता है। सो दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, बट दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, बट दिस रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि हमेशा हाइड्रोजन का ऐड हो गया तो वो रिडक्शन रिएक्शन ही होगी, हमेशा ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। तो फिर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? सो नाउ वी विल टेक द मॉडर्न डेफिनेशन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन फॉर इट? देखिए समझिए, अब है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मॉडर्न definition of oxidation and reduction. It's very important definition for oxidation and reduction. And what is the modern definition? Removal of electron or increase in the positive oxidation number is always known as the oxidation reaction. Okay, I'm writing here removal of electron or increase in positive oxidation number is always known as oxidation reaction. Always remember, removal of electrons or increase in positive oxidation number is always known as oxidation reaction. Removal of electron, suppose it is the Fe. The single atom or the single molecule always have a 0 oxidation number when it donates 2 electron. It is donating the 2 electron, then it will be converted into Fe2+. It donates the electron, the removal of electron is here taking place, so this reaction will be the oxidation reaction. Okay, suppose this is the zinc. Here zinc is the single atom, and single atom always has the 0 oxidation number. When it produces 2 electron, then it will be converted into Zn2+.
plus. So what type of reaction is here? Oxidation reaction. Okay, suppose aluminium, it has a 0 oxidation number. When it will be donate 3 electron, then it will convert into Al3 plus. Here the removal of electron take place, so this type of reaction will be the oxidation reaction. Removal of electron or increase in positive oxidation number. Positive oxidation number. Suppose it is the ferrous Fe2 plus, already has the 2 positive oxidation number. Okay, when it will produce one more electron, then it will be convert into Fe3 plus. पहले 2 प्लस थी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, अब 3 प्लस, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सपोज it is the Sn2 plus, when it produce 2 more electron, then what will be formed? Sn4 plus. Okay, Sn4 plus. So here positive oxidation number is increased. यहाँ पर Sn2 plus Sn4 plus में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Now we will understand what is the reduction reaction. Okay, so I am writing here the opposite definition of oxidation reaction, that is gain of electron. Gain of electron or decrease in positive oxidation number is known as reduction reaction. Is known as reduction reaction. Okay, suppose it is the fluorine. This is a single atom, so here the oxidation number will be 0. When I will give here one more electron, then it will be converted into F minus, because fluorine is accepting the electron, so here will be formed F minus. So here electron are gained or electron are accepted, so this reaction will be known as reduction reaction. Okay, chlorine, when I will give one more electron, then it will be convert into Cl minus. So what type of reaction is here? Reduction reaction. Oxygen, when I will give here 2 electron, then it will be converted into O2 minus. So what type of reaction will be here? Reduction reaction. Sulfur, when I will give 2 electron, then it will convert into S2 minus. So what type of reaction is here? Reduction reaction. So gain of electron or decrease in positive oxidation number. Decrease in positive oxidation number, how? Suppose it is the Fe3 plus. It already have the 3 positive oxidation number. When I will give 1 electron, then it will be converted into Fe2 plus. Okay, it will be converted into Fe2 plus. So here positive oxidation number is decreasing. 3 plus is converted into 2 plus. The positive oxidation number is decreasing, and the decrease in positive oxidation number is also known as reduction reaction. So this is the modern definition for oxidation and reduction. Now we will discuss about the redox reaction. At the first I have already told you about the redox reaction. What is the redox reaction? The simultaneous reaction of oxidation and reduction, or the combination reaction. The combination or the simultaneous reaction of oxidation and reduction. The combination of oxidation and reduction.
is known as redox reaction, is known as redox reaction। एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। आई कैन से द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। तो एक रिएक्शन के अंदर, पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतने वापस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कह दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जिंक, इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+। इट विल बी कन्वर्ट इनटू Zn2+ व्हेन इट विल बी प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो what type of reaction is here taking place? Oxidation reaction. It is the oxidation reaction. I am writing here oxidation reaction. Okay, but in this reaction I am writing here reduction reaction. Cu2+, when Cu2+ gain or accept these 2 electrons, then it will be converted into Cu. Here Cu2+ are accepting 2 electrons, so it is the reduction reaction. I am writing both the reactions separately. This is the oxidation, this is the reduction. When I will combine these reactions, then we will form the redox reaction. Redox reaction. What will be the redox reaction for this reaction? So add this reaction. First of all, I am writing the reactant. Here reactant is Zn. Here Cu2+. The electron are cancelled. What is the product? Zn2+ and Cu. This is the redox reaction. The combination reaction of oxidation and reduction is known as the redox reaction. Remember always. Okay, I am writing here another example for redox reaction. Mg plus O2 form MgO. Okay, Mg plus O2 form the MgO. It is a reaction. In this reaction, oxidation and reduction both are taking place. Okay, first of all, I am writing here oxidation half reaction. मैं हाफ रिएक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आधी रिएक्शन ही मैं लिख रहा हूँ, हाफ ही लिख रहा हूँ, केवल ऑक्सीडेशन नहीं। मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में नहीं, कंप्लीट रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर मैं ऑक्सीडेशन लिखता हूँ तो वो एक हाफ रिएक्शन है, अगर मैं सेपरेटली रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूँ तो वो एक हाफ रिएक्शन है। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तब कंप्लीट रिएक्शन बनती है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसमें क्या होगी, देखो यहाँ पर Mg 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब मैग्नीशियम है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम है कितने, 2। अब एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है तो 2 मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं एक रेडॉक्स रिएक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द रिडक्शन रिएक्शन फॉर इट, व्हाट विल बी द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन half reaction. What will be the reduction half reaction? Oxygen will only one oxygen accept the 2 electron. Here 2 oxygen, so 2 oxygen will accept 4 electron and it will be converted into O2 minus. It is the reduction reaction, and when we will combine the oxidation and reduction reaction, then this reaction will be formed. Mg
the redox reaction for this reaction, Mg plus O2 and it will be formed 2Mg. So this is the redox reaction. Okay. In next class we will discuss about the oxidizing reagent, reducing reagent and oxidation number. Okay. So keep touch in the class. Thank you so much.